नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पास में एक साउथ वेस्टर्न रेलवे का पेपर है, मैसूर डिवीज़न का 20% एलडीसी कोटा का था। पुराना पेपर है बट हमको तो सवालों से मतलब है, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं रिलेटेड तो हमारी तैयारी हेतु प्रिपरेशन हेतु कहीं से भी कोई भी पेपर मिले हमको हल करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए। इसमें 110 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है पेपर ये। ठीक है? तो देश भारत का उत्तरदायी है कि वे संपूर्ण संदेश की प्रक्रिया से प्रक्रिया डिलीवरी करें। देखिए हिंदी में कुछ चीज़ें हिंदी में जब इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी तो हम हिंदी में बात करेंगे। ठीक है? तो अ, इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं और जिसका हिंदी है वो समझ नहीं आता है कभी-कभी। और द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज इन रिस्पांसिबिलिटी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एंटायर मैसेज, ये किसका काम है? ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी आईपी लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। दूसरा है इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग द ट्रांजिशन एट द मिडिल ऑफ बिट 2 4। तो इसका है आंसर सिंक्रोनाइजेशन। दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन फिर है डैश is a type of transmission impairment in which the signal loss is due to the different propagation speed of each frequency that makes up the signal। ये है डिस्टॉर्शन आंसर। ये सवाल काफ़ी सेट सवाल है, बार-बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ईथरनेट एड्रेस। एड्रेस में जिसमें लिखा है 0101 1010 001 0001 0101 0101 001 1000 1010 1010 और 0000 1111 तरीके से तो आंसर होगा डी। निकालोगे तो अब आता है कि व्हेन डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट आर सेंट ऑन द सेम फ्रेम, दिस क्या कहलाता है? तो बोलते हैं हम कि बैकिंग। फिर है कि एडीएसएल मॉडेम यूज द मॉड्यूलेशन मेथड, ये क्यूएएम और प्लस एफडीएम मॉडल। दूसरा है नेक्स्ट द बैंडविड्थ अवेलेबल इन 802.11a वीलैन के डब्ल्यू लैन के लिए। ठीक है? ये है अपनी 54 एमबीपीएस दोस्तों। यागी एंटीना का गेन कितना है? तो 10 टू 20 डीबीआई। फ्रीक्वेंसी इन द बीएचएफ रेंज प्रोपोगेट बाय मींस, ये लाइन ऑफ साइट होता है यूएचएफ। यूएचएफ का पूछा है। ए मेगर इज यूजुअली, तो ये क्या है? एक मूविंग कॉइल टाइप उपकरण है। ठीक है? यानी कि मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है रिसीवर इन द सेंसर ब्लॉक ऑफ ए केबल रूट प्रेशर शुड बी, ये है सेंसिटिविटी और उच्च सिलेक्टिविटी दोनों ही होनी चाहिए। करेक्टर इम्पीडेंस ऑफ द स्विचबोर्ड केबल, तो इसका होता है 600 एम 600 ओम्स। द नंबर ऑफ यूनिट्स 50 पेयर केबल आर, 50 पेयर की केबल के अंदर जो यूनिट होंगे वो 10 के 5 यूनिट होंगे। एंट्री ऑफ मॉइस्चर इज प्रिवेंटेड बाई डैश इन द पीआईजेएफ केबल, जेली। वाटर को मॉइस्चर का प्रिवेंट करती है जेली। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू, ये रिड्यूस करने के लिए कैटनरी वायर से दो वोल्टेज आते हैं उनको रिड्यूस करने, इंड्यूस वोल्टेज को। ठीक है? to reduce induced voltage due to catenary wire. Maximum permissible induced voltage in a underground telecom cable, maximum जो है वो है 150। The transmission loss in 0.9 mm conductor dia quad cable is, तो इसका पूछा गया है
ये 0.6 cable route indicator markers are to be the placed at every dash meter on normal path. ये 50 मीटर पे हम लगाते हैं, ठीक है? मार्कर के बारे में लिखा गया है। The impedance ratio of matching transformer used for block circuit unloaded cord cable 470 1120. Transmission loss test shall be carried out with a tone frequency. तो इसमें पूछा गया ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट shall be carried out with अच्छा टोन फ्रीक्वेंसी तो 800 हर्ट्ज की टोन हम देते हैं। Before disconnecting block BPAC and IV circuits for testing of cord cable dash has to be the obtained from station master। तो यहाँ डिस्कनेक्शन मेमो हमको देना पड़ता है। नेम एनी वन कंट्रोल सर्किट यूज्ड ओनली RE सेक्शन। तो ये है अपना TPC सेक्शन पावर कंट्रोल। सारा सिस्टम इज ऑपरेटिंग थ्रू एस कंट्रोल। तो ये है रिमोट कंट्रोल। मास्टर फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट सिस्टम ऑपरेट ऑन डीसी। तो ये 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट मास्टर। टेलीफोनी द फोन टाइप कनेक्टेड बिटवीन बॉस एंड सेक्रेटरी। ये मेन एंड एक्सटेंशन टाइप फोन होता है। अब आता है व्हाट इज नंबरिंग ऑफ इवन एंड ऑड सेल्फ ऑफ द पेरिफेरल सेल्फ यूनिट 6 इन कोरल फ्लेक्सिकॉम यूनिट 1000 ISDN। ये है 12 and 13। Which card is digital tone generator in Coral Flexicom 6000 ISDN exchange? तो ये 32GC। Which card of Siemens iPath 3800 ISDN exchange supports cordless telephony? तो SLCN। What is the radius of operation of a base station in Siemens iPath 3800 ISDN exchange में? ये है 300 meters। How many DECT handset are supported in Siemens iPath 3800 ISDN exchange? 6। And ISDN PRI transmission rate are ये है 2048 kbps। What type of signaling used in ISDN exchange? CCS7। Complementary service between PBX are provided by Q signal protocol। मैग्नेटोटेलीफोन ओनली जो है ये क्या करता है? रिंगिंग करंट इज सेंड ऑन लाइन टू कॉल्ड सब्सक्राइबर। SS7 signaling system are also referred। ये है कॉमन चैनल सिग्नलिंग। SS7 आर्किटेक्चर सिग्नल कंट्रोल पॉइंट आर रेस्पॉन्सिबल। ये है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम अदर। In pulse code modulation, the pulse amplitude modulation PAM signal converted into the digital form by the process called quantization। PCM to reduce the quantization error, this method is adopted। ये है linear quantization। In PCM for band limited signal for 4 kilohertz, the sampling frequency will be kilohertz, 8 kilohertz। PCM system use this as line coding system technique। ये है HDB3। जीटर की यूनिट है UI। The jitter of unit, the unit of jitter is UI। Vendor is defined as the dash term variation of the significant instant of a digital signal from their idle position in time। तो ये जो वेंडर का पूछा है, वेंडर जो है लॉन्ग टर्म। वॉकी टॉकी सेट
यानी कि द एवरेज कवरेज एरिया रेंज वॉकी टॉकी या हैंडल सेट मीटर तो 1 to 2 मीटर. The frequency allotted by WPC, Wireless Planning and Coordination Wing of Ministry of Communication in VHF range for the Indian Railways, PA 146.24. The number of bits MAC address 8 bit. Additional lane switch operate layer 2. The hardware MAC address is burned on which part of NIC ROM. Subnet mask used in RailNet 55.255.0.0.0. Backbone connectivity of voice to Mbps data line. Topology of voice mesh top. voice के लिए mesh top. उसके बाद में टोपोलॉजी यूज फॉर यूटीएस और पीआरएस के लिए यूनिफिकेशन. यह इन्वर्टेड ट्री एंड पार्शियल mesh. The round trip time for the smooth working between client terminal and server 130 to 150 seconds. The number of LED based display boards can be connected one output port of PDCH 8 boards. Multimode fiber is best designed for less transmission distance shorter. The numerical aperture of a SM fiber is the about का 0.10 से लेके 10 से 0.17. With reference to fiber optic communication, scattering and absorption of the light signal cause बोलते हैं हम person. After laying the optical fiber cable at least dash mm from the surface of the cable should be covered with riddle earth 120. A normal optic fiber cable drum in kilometers. The loss offered by the fusion splicing of optical fiber shall not exceed dB 0.2 dB. The answer. Dark current यानी ID of a optical detector is defined. Dark current. Dark current is the current generated in the photodetector in the absence of any optical signals. Responsibility of a photodetector defining a measure of how much output current is obtained for each watt and input light. Element can be classified into categories, the 4 categories. Getting fire to train railway installation and railway properties. बोल रहे हैं इंस्टॉलेशन एंड रेलवे संपत्ति में फायर सेटिंग. ये क्या है? मानव निर्मित हैंडमेड डिजास्टर. Every railway person is responsible for the security and protection of railway property. LC gate accident come under to category रेल दुर्घटना ट्रेन एक्सीडेंट. 1 hour period generally known as golden hour. Railway resources available at ARME ART depend depot and Hillsbeer within the division comes under resources unit 2. एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन आर तो ब्रेकडाउन ट्रेन भी होती है, आर्मी भी होती है और SPRT स्पार्ट भी यानी कि सेल्फ प्रोफाइल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एंड टावर वैगन ऑल ऑफ द all safety and other concerned officer must effect breakdown train and the ARME must make a through action at least once in a month 3 month.
मेडिकल वैन के टर्नआउट के लिए समय दोहरी निकासी हेडिंग टी ए आर हेडिंग टी टाइम कहने का मतलब ये डबल एग्जिट हेडिंग टारगेट टाइम फॉर द टर्निंग आउट द मेडिकल वैन 3 मिनट डबल हेडिंग बोला है receipt of information of the occurrence of the accident that is shall processed by the quickest available means the sense of the accident ये AESSCSNT all serious accident shall be inquired by the KRS क्यूब टेलीफोन desk check desk करके क्यूब टेलीफोन should be made available to the passenger and communicate with their relatives. PD. What is the caudal life of IPIS system? पहले 10 थी अभी 8 कर दिए दोस्तों. Radio waves sometimes bend around the corners due to diffraction. Diffraction. High frequency long distance propagation mostly depend on a sphere section. What is the distance from the far end the ground wave the nearest point where the sky wave return to earth called tip zone? Silicon diode. The cut-in voltage for the silicon diode approximately 0.6 volt. PN junction has a thickness of the order 10 की power 6. An example of non-ohmic resistance diode. When the length of conductor is double and the area of cross section remain the same, then its resistance is double. Resistance R1 and R2 with the resistance 5 ohms and 10 ohms respectively are the connected in series. The voltage across R1 and 4 volt. What will be the value of current across R2? 0.8 ampere. इसका पूछा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स. एक्सीलरेटिंग फोर्स जो है यहाँ लिखा है एक्सीलरेटिंग फोर्स यानी कि एक्सक्लेटरिंग बोल सकते हैं. On the Diwali rocket, if it injects 0.05 kg the gases per second at a velocity of the 400 milliseconds. तो ये 20 न्यूटन. पैराशूट taking B struck the ground with his legs fixed and come to rest with an upward acceleration of the 3g 3 gram. What is the force said by him the during ending forward? Two trolleys of mass m and the 3 meter are the connected by the string. When they are the compressed and released, they move off in the opposite direction and come to rest after covering a distance of s1 and s2 respectively, uh, assuming the coefficient of the frictions the constant the ratio of s1 and s2.
9 ratio by 1. A machine a machine gun fire a bullet of the mass 40 grams with a velocity of 1200 millisecond or minus 1. The man holding it can exert maximum forces of the 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the mall? तो ये है 3. The power generated by the transistor approximately equal to collector current time collector emitter voltage. Which current source is connected between collector and base terminal in order to uh, supervise the sequence of base control in active region DC model of BJT. सभी आंसर है बीटा एल बी जीरो बेस करंट के साथ एक छोटे कलेक्टर करंट निम्नलिखित रिसाव करंट कारण है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीकेज करंट was a small collector current with zero base current. ये collector diode. Which logic gate is represented by the following combination of logic gate? ये NAND gate का representation. As the temperature of a transistor goes up, the base emitter resistance decrease. The maximum impedance of the transmission line 50 ohms and the standing waves ratio of 2.5 is 125. The propagation constant of the transmission line with the impedance and admittance of a 9 and 16 respectively ये है 12. Which of the following is the phenomenon caused when radio waves travel in two or more paths during the propagation and produce slowly changing phase difference between signal to heading. The radio waves were the demonstrated experimentally by Hertz. What will happen if a force is applied to a body moving with a constant speed along a straight लाइन यानी एक सीधी लाइन के साथ में यदि कांस्टेंट गति के साथ एक बॉडी मूव को बल लगाया जाता है क्या होगा तो कंटिन्यूस टू मूव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सिंगल मोड फाइबर जो है द क्लेडिंग डायमीटर मस्ट बी लीस्ट ये होगा 10 टाइम द कोर डायमीटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस द रूट मीन्स स्क्वायर value of the electric fields is 6 voltmeter. The peak value of the magnetic field 0.83 into 10 की power 8. In electromagnetic waves, the phase difference between electric field vector and magnetic field vector 0. Light of the wavelength 4000 lambda is the incident on a sodium surface for which the threshold wavelength of the electrons is 542 lambda. The work function of sodium ये है 0.29 EB. कुछ जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों इसमें लिखा है संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है
ये है भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेके 351, ठीक है? भाग 17। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 से। संविधान के अनुसार कब तक हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बन जाना चाहिए था? 20 जनवरी 1965। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समितियां की बैठक की मतलब तिथि क्या है? ये 3 महीने में एक बार। संविधान लागू करने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14। संचार की दृष्टि से राज्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली। 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में आने वाले दस्तावेजों को इस भाषाओं में जारी किया जाना चाहिए, तो हिंदी और अंग्रेजी। सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित नामपट्ट में भाषाओं का क्रम क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, यानी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। 110 क्वेश्चन हैं दोस्तों, फटाफट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।